Good morning, everyone. Welcome to the morning con call. First, we'll start with the derivative and technical update. On technical front, if we see yesterday, Nifty started the week on a positive note. Now, index has a bounce back to its previous breakdown levels. So now momentum is a positively placed and suggests a retest of a 50-100 SMA levels, which is around 19,560. So strong closing above 19,500 and 19,600 levels may lead index might retest at 20,000 levels. On the lower level, 10 EMA exponential moving average is around 19,239 level. So 19,200 around act as immediate support level. Yesterday, broader markets show a strength. We can see the small cap outperform yesterday. So on the sectorial front, reality, pharma, metal among the top sector movers. On the Bank Nifty front, yesterday Bank Nifty witnessed a strong recovery from the day's low level. If you see on the daily chart, last three sessions, Bank Nifty form a continuous doji candlestick. But one important thing is Bank Nifty forming a higher high low formation, which is a good thing. So overall, technically, bias remains positive for the index. Support for the index is seen at 43,200 levels, which is a 200 simple moving average. So 43,200 is a support zone for the Bank Nifty. On the derivative front, Nifty future witnessed a short covering to the tune of minus 1.13 percentage, followed by OY fall in OY. PCR data is a gain from 0.96 to 1.14 levels, which is adding a strength. Call writing was a witness 19,600 option and followed by 19,300 put option, suggesting a strength. On the Bank Nifty front, Bank Nifty future witnessed a long build up to the tune of 2.75 percentage, which followed by the rise in open interest. PCR data also up from 1.01 to 1.10, which is a good and adding a strength. Major call writing was seen at 44,200 call option and put writing at 43,500. One can look the positive bias stock is a JK Cement and Lemon Tree. On the FIR data front, FIR added longs by 15,324 and net short by 1 lakh minus 1 lakh 47,370. So overall long short ratio is only 20%. On the cash front, FII sold 549.37 crore. DII bought 595.70 crore. Yesterday, long build of fitness on JK Cement, Ramco Cement, and OGC. Overall, cement stocks yesterday on a momentum. A short build up witnessed Bata India, Bank of Baroda, and PD Life. So that's it from my end. Now I will hand over to Devang sir for further research update. Thank you and over to you, sir. Thank you, Kshitija ma'am. Good morning, all. So, a couple of fundamental news from my end. Firstly, on Nilkamal. So, Nilkamal has reported numbers, and the numbers were below our estimates on all key parameters. Sluggish demand for plastic products and slowdown in e-commerce business weighed on net sales, while further softening of raw material prices eroded operating margin. Raking business of a company to witness suppressed demand in Q2. On positive note, ready furniture business of Nilkamal reported healthy 55% YOY growth, which enabled it to offset degrowth of overall business. At the end of H1 FY24, Nilkamal had 102 operating stores selling ready furnitures, mattresses, etc., and 28 home stores. Given the subdued H1 FY24 results, we have marginally trimmed our FY24 and 25 estimates by 4.2% and 13.1%. So we are maintaining our hold rating on the stock with a revised target price of 2367 from earlier target price of 2627 and assigning a 18x PE. In terms of Greenply, so Greenply's operating margin was significantly better than our estimates, which was led by stronger than expected volumes and margins in MDF segment. Despite the rise in imports of MDF in India, Greenply's MDF volumes of 31,000 CBM was commendable in our view. MDF segment EBITDA margin is at 15.5% was better than our forecast.
The company's forecast future further performance in H2 FY24 for MDF and aims to launch value-added products such as pre-lamb, Boil Pro, Carb, etc. We raise our FY24 and 25 sales estimate by 7% and 3%, given better than expected MDF sales volume. However, considering that the uh, stock price has recently run up, so despite revising our target price upwards by to 185, we are maintaining our hold on the stock price and we are awaiting a better entry point. In HG Infra, revenue grew by 16% YOY. However, it was down 32% QOQ. EBITDA was up 15% YOY, and net profit declined by 5% YOY, which was lower than our estimates by 14%, and actual PAT has declined by 5%. This is due to higher interest and depreciation. Though, though revenue and margins were good, Q2 FY24 saw rise in revenue by 16% YOY. So OCF was also weak and order book stands at 115 billion, which gives a visibility of 3 years. No inflow in Q2 FY24, hence we have a neutral rating for HG Infra. For Sundaram Finance has reported strong numbers. AUM was up 25%, NII is up 16.4%, pre-operating margin is up 23%, and GNPA stood at 1.86, which is lower than 2.54% YOY. Asset quality has also improved by 1.86% versus 2.54%. So this indicates that Sundaram has reported overall good numbers, and we have a positive view on Sundaram. Repco Finance similarly has reported healthy numbers of NII was up 6.7%. NIM has improved by 30 BPS. Operating profit has increased by 7.3% QOQ. So overall decent set of numbers, and we have a positive view on Repco. For Cipla, the drug maker has approved transfer of generic business to Cipla Pharma and Life Science. The generic business will be transferred for rupees 350 crores. The sale will be completed by December 31st, 2023. Broadly, not much of a movement. The company opened for Bajaj Finance. The company is going to open a QIP in November 6 with a floor price of 7533 per equity share. The floor price is at discount of only 0.37% and broadly a neutral view on the stock. And KPR Mills, the company has approved an investment of around 250 crores for the expansion of fabric processing capacity. The fabric processing capacity is set to increase from 25,000 MT to 37,000. So this will entail an investment of 100 crores and it bodes well for KPR Mills. That's it from my end. Over to you, Shanti. Thank you, sir, and good morning, everyone. So, starting with some further updates. First is on Wipro, where the country's fourth largest software services firm has made it mandatory for its employees to work from office 3 days a week, effective from 15th of November. It overall is signaling a shift in the IT industry towards decreasing remote work arrangement. Next update is on Bajaj Finance, where the company on 6th of November announced the launch of a qualified institutional placement to raise funds with the floor price set at rupees 7,533.81 per share. The company informed the exchanges that it may offer a discount of up to 5% on the floor price. The issue was given a nod by the company's QIP special committee, which met earlier in the day. Speaking of Adani Energy, the company Adani Energy Solutions on Monday reported a consolidated net profit of rupees 284 crores in the second quarter. Overall, it was 47% higher as compared to rupees 194 crores, which was recorded last year. The company's consolidated revenue came in at rupees 3,421 crores, which was up by 13%. It overall clocked in the corresponding quarter of the previous fiscal. Speaking of Imami, the homegrown FMCG major on Monday reported a flat profit after tax of rupees 180 crores for the second quarter. The company had posted a net profit of rupees 180.13 crores in the July to September quarter a year ago. However, Imami's revenue from operations rose by 6.28% to rupees
864.87 crore during the quarter as compared to rupees 813.75 crores in the corresponding quarter. Next update is on NHPC, where Mini Ratna Power Company, National Hydroelectric Power Corporation, on Monday reported a net consolidated profit of rupees 1,693 crores. The consolidated net profit stood at 1,685 crores in the quarter that ended September last year. So overall, the company shares closed marginally higher at rupees 50.39 per share on BSE on Monday. Speaking of Bata India, the footwear retailer and manufacturer, on Monday said that it has signed a licensing and manufacturing deal with Authentic Brands Group to launch and sell lifestyle brand Nine West in India. Bata has 4 manufacturing facilities in the country with a retail presence through 2,050 stores in multiple cities. In year 2022, Authentic Brands Group announced the acquisition of sportswear brand Reebok from Adidas. Speaking of Nykaa, the FSN e-commerce ventures, who are the operator of online beauty and fashion retailer Nykaa, on 6th of November reported a consolidated net profit of rupees 7.8 crores. It was overall higher by 50% as compared to rupees 5.2 crores, which was clocked last year. Sequentially, the net profit increased by 44% from rupees 5.4 crores as it was reported in the first quarter of the current fiscal. The next update is on Bajaj Electricals, where the company reported a 56% decline in the consolidated net profit to rupees 27.28 crores. Overall, the company had posted a net profit of rupees 62 crores during the July to September period last year. Overall, the net sales declined by 3.76% to rupees 1,107.40 crores in the second quarter of the current fiscal. Next update is on Dalmia Sugar. The numbers of the company were quite positive, where it clocked a net profit at rupees 54.9 crores versus rupees 11.7 crores. Revenue came in at rupees 732 crores on a year-on-year basis as compared to rupees 579 crores. Speaking of GSPL, again the numbers look quite positive as the company witnessed a net profit at rupees 532 crores as compared to rupees 229 crores on a year-on-year basis. Revenue too was at rupees 529 crores as compared to rupees 441 crores. Speaking of Hindustan Petroleum, the net profit of the company was at rupees 5,118.2 crores. EBITDA was at rupees 8,217 crores. So overall, the numbers look quite positive. Radico Khaitan posted a net profit of rupees 62 crores, while the revenue stood at rupees 3,715 crores on a year-on-year basis, as compared to rupees 3,018 crores last year. Speaking of Varun Beverages, there was a 45% capacity expansion in the company. It is expected by the summer of year 2024, which is a positive update for VPL. Speaking of Central Bank of India, the government has extended Mr. M.V. Rao's term as the MD and CEO of the bank till July 31st, 2025, which is overall a positive update for Central Bank of India. Speaking of Bajaj Finserv, the October insurance premium was up by 50% on a year-on-year basis, which is a positive update for the company. Speaking of HDFC Life, again, there was a 40% increase in the insurance premium year-on-year for the company, which is again a positive update. New India Assurance Limited, in this case, the October insurance premium was up by 15% on a year-on-year basis, while in case of Star Health, the October insurance premium was up by 18% on a year-on-year basis. Next update is on Bikaji, where according to the numbers, the company posted a net profit at rupees 60 crores as compared to
rupees 41 crores on year-on-year basis, while the revenue was at rupees 608 crores versus rupees 576 crores again as compared to last year. Overall, the numbers looked quite positive. Final update is on Jamna Auto, where the company posted a net profit of rupees 50 crores, while the revenue stood at rupees 607 crores. So overall, the numbers look quite positive in this case as well. So this was all from my side. I'll now hand it over to Hitendra for further updates. Yeah, thank you and good morning everyone. Continuing this update in Hindi, starting with नीलकमल. नीलकमल के रिजल्ट्स देखिए कि हमारे एस्टिमेट्स के बिलो तो स्लगिश डिमांड था प्लास्टिक प्रोडक्ट सेगमेंट से और ई कॉमर्स के स्लो धीमे बिजनेस के चलते से नेट सेल्स पे भी थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए देगा। हमें यहाँ से लगता है रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से होंगे तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा और एरोड हो सकता है। जो बिजनेस है रैकिंग का उसमें भी कंपनी ने सरप्राइज डिमांड ही देखा गया Q2 में। पॉजिटिव नोट में ये देखा गया कि रेडी फर्नीचर जो था एनएलके का उसमें ग्रोथ देखी गई 55% वाईओवाई पे, जो कि ऑफसेट डी ग्रोथ के ओवरऑल बिजनेस को। हमें लगता है एनएलके का 102 एक्सक्लूसिव जो ऑपरेटर स्टोर्स है सेलिंग रेडी फर्नीचर मैटर्स सेल कर रहा है एट द रेट 28 होम स्टोर्स पे, सो वो थोड़ा सा डिमांड में पुश अप कर सकते हैं। सो सबड्यूड रिजल्ट्स के चलते हमने मार्जिनली ट्रिम किया हमारे एस्टिमेट्स को 4% से और टारगेट प्राइस को घटाकर जो कि पहले 2600 से गिरा के 2350 के आसपास किया। नेक्स्ट रिजल्ट है ग्रीन प्लाई के नतीजे से बेहद ही अच्छे दिखाई दिए गए थे। जो एस्टिमेट से हमारे मार्जिन के चलते वॉल्यूम्स में ग्रोथ दिखेगी मार्जिन सेगमेंट में, और इम्पोर्ट्स जो थे एमडीएफ पे इंडिया में भी ग्रीन वॉल्यूम्स के जो वॉल्यूम देखेगा वो 31,000 क्यूबिक सीबीएम के हिसाब से देखे गए थे। एमडीएफ सेगमेंट का एबिटा देखा जाए 15.5% के आसपास था, और जो कंपनी फोकस कर रही है इंप्रूवमेंट को एमडीएफ सेगमेंट के लिए और उसको प्रीलैम और बॉयल प्रो कार मटेरियल्स को भी वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहती है, तो हमने हमारे एस्टिमेट्स को 7% से रेज किया है और वॉल्यूम्स के लिए भी 3% से रेज किया गया है। 15x के प्राइस मल्टीपल के साथ 185 का नया टारगेट प्राइस हमने निकाला है ग्रीन फ्लाई के लिए। निजी इंफ्रा के भी नतीजे देखे तो 860 करोड़ का हमें पैट देखा गया था, और जो कि 32% क्वार्टर में फॉल देगा, जो कि 16% राइज देखा गया था। एबिटा देखा जाए तो 1.3 बिलियन के आसपास था, एबिटा मार्जिन देखा जाए तो 16% के आसपास था। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 617 मिलियन का देखा गया है, और पैट हमारे एस्टिमेट्स के आसपास है जो कि 14% के आसपास से, बट सॉरी पैट लोअर है 14% के हिसाब से और डिक्लाइन हुआ 5% वाई में। सुंदम फाइनेंस के भी नतीजे देखेंगे। अगर हम ईयूएम देख रहे हैं 401 बिलियन का ईयूएम है, जो कि 25% हायर है और वाई पे, और 7% क्वार्टर पे। नया देखा जाए 4.8 बिलियन के आसपास का, जो कि 17% हायर है और 8.6 है क्यू पे। ऑपरेटिंग प्रोविजन प्रॉफिट देखा जाए 5.3 बिलियन का, जो कि 24% हायर है और 23% क्यू पे। ओवरऑल पैट देखा जाए तो 3.6 बिलियन का आया, जो कि 21% हायर है एंड 30% क्वार्टर में। क्रॉस एनपीए में भी हमें डिक्लाइन आती है। देखिए 64 बेप्स का डिक्लाइन है, जो कि 2.5 से गिर के 1.86 का हो गया। नेट एनपीए में भी मार्जिनल 30 बेप्स का डिक्लाइन दिखा है, जो कि 1.37 से गिर के 1.08 हो गया। एनआई ग्रोथ 8.6% से है। रेपको फाइनेंस के भी नतीजे एनआई ग्रोथ में देखा 6.7% आया था, लेड बाय एनआईएम्स के चलते एनआईएम्स इंप्रूवमेंट हुआ 30 बिप्स के आसपास का, जो कि 5.4% का है, और ईल्ड इंक्रीज हुआ 20 बिप्स के आसपास की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 7.3% का क्यू बेसिस के। बेसिकली इसमें अकाउंट जो इंक्रीज हुआ एनआईएस के चलते उसमें थोड़ा सा पुश अप होते देखा, और क्वार्टर पे 7% और वाई पे 19% का ग्रोथ देखा। नॉन इंटरेस्ट इनकम देखा जाए तो 86% क्वार्टर और 8.4% वाई में देखा गया, और पैट भी इंक्रीज हुआ 10% से। एसेट क्वालिटी देखा जाए GS3 में भी डिक्लाइन आती है, देखा 5.5 से गिर के 4.9 आ गया। ग्रॉस एनपीए डिक्रीज हुआ 8.3% से। नेट एनपीए में भी हमें 20% का फॉल आता है देखा एब्सोल्यूट टर्म्स में। सिप्ला ने एक अप्रूव किया है ट्रांसफर उनके जेनेरिक बिजनेस का, जो सिप्ला फार्मा एंड लाइफ साइंसेस है, और ये ट्रांसफर होगा 350 करोड़ के लिए, और सेल कंप्लीट होगा 30 दिसंबर के आसपास की। अगली अपडेट देखेंगे विप्रो ने कहा कि उन्होंने एक मैंडेटरी एम्प्लॉय करते हैं वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए 3 डेज अ वीक इफेक्टिव 15 नवंबर से रहेगा, और ये शिफ्ट हो रहा है आईटी इंडस्ट्री जो पहले वर्क फ्रॉम होम से धीरे धीरे वर्क फ्रॉम ऑफिस के कल्चर से वापस रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले टाटा ने ये मूव स्टार्ट की थी, जिन्होंने फुल टाइम 5 डेज अ वीक कर दिया है। सो इससे देखा जाए तो एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑफिस आ रहे 3 टाइम्स अ वीक। एचपीसीएल के भी नतीजे देखा जाए 5,826 करोड़ का प्रॉफिट देखा गया जुलाई से सितंबर में, बेसिकली जीआरएम्स के चलते और चलते पैट में हमें ये डिफरेंस आते हैं। देखा अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो 2500 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया गया था, बट रेवेन्यू देख रहे तो 10% डिक्लाइन हुआ है, जो कि 1 लाख करोड़ का है।
बजाज फिटनेस ने भी एक QIP करने वाले फ्लोर प्राइस सेट किया 7,500 करोड़ का, और जो कंपनी ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंज को, जो कि 5% डिस्काउंट है कल की क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से। अडानी एनर्जी ने भी कहा कि उनका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है 284 करोड़ का सेकंड क्वार्टर में, और 47% हायर है कंपेयर टू 194 करोड़, जो कि ईयर अगो पीरियड में। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखा जाए 3,421 करोड़ का, जो कि 13% हायर, और 3,032 करोड़ का क्लॉक किया गया। इमामी के भी नतीजे रिपोर्ट किए गए। अगर हम पैट देखे, जैसे 180 करोड़ का है सेकेंड क्वार्टर के लिए, कंपनी ने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था 180 करोड़ 0.13, फ्लैटिश था, फ्लैट था। और रेवेन्यू देखा जाए तो 6% हायर था, जो कि 865 करोड़ के आसपास का है, पहले देखा जाए 813 करोड़ का है। NHPC के भी हम नतीजे देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 1700 करोड़ के आसपास का है, और सितंबर क्वार्टर में देखा जाए तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1685 करोड़ का। कंपनी के शेयर जो देख रहे मार्जिनली फ्लैट ही ट्रेड हो रहे थे। बाटा इंडिया ने भी कहा कि उन्होंने एक लाइसेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग डील साइन की ऑथेंटिक ब्रांड्स ग्रुप के साथ, जो कि लॉन्च करेंगे और सेल करेंगे 9 वेस्टर्न इंडिया में। बाटा के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, और इनका रिटेल प्रेजेंस है नियर 2050 स्टोर्स के आसपास मल्टीपल सिटीज में। ऑथेंटिक ब्रांड ग्रुप है, जो कि उन्होंने एक्विजिशन किया है रीबॉक को एडिडास से। नेक्स्ट है नाइका के भी नतीजे देखेंगे। नतीजे में हम देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7.8 करोड़ का देखा गया सेकेंड क्वार्टर में, 50% हायर था, जो कि 5.2 करोड़ था सेम ईयर लास्ट ईयर में। सिक्वेंशियली नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ 44% से 5.4 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर फिस्कल में। बजाज इलेक्ट्रिकल के भी नतीजे देखे, 56% डिक्लाइन हुआ नेट प्रॉफिट, जो कि 27 करोड़ के आसपास का है। वीक कंज्यूमर डिमांड के चलते नतीजे क्या निराशाजनक है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट 62 करोड़ क्लोज किया था लास्ट ईयर में, और सेल्स भी हम देख रहे थे 4% से डिक्लाइन ही हुई है, जो कि 1107 करोड़ की है, और सामने 1150 करोड़ की दिखी गई। डालमिया शुगर के भी नतीजे हम देख रहे हैं, जो नेट प्रॉफिट 55 करोड़ का दिखाया गया, जो कि 12 करोड़ के आसपास का है। रेवेन्यू में भी हमें अच्छा जंप आते थे, क्योंकि 580 करोड़ से जंप होकर 732 करोड़ का है। GSPL के भी नतीजे अच्छे थे, नतीजे देखे गए थे, जो कि 229 करोड़ से जंप होके 532 करोड़ हुआ नेट प्रॉफिट में। रेवेन्यू देखा रहा है 441 करोड़ से जंप होके 530 करोड़ हुआ है। रैडिको केतान के भी नतीजे आगे। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो 52 करोड़ से जंप हो गया 62 करोड़ तक गया, और रेवेन्यू हम देख रहे हैं 3,000 करोड़ से जंप हो गया 3,715 का हुआ है। लास्ट न्यूज अपडेट ये रहेगी, बेकाजी के भी नतीजे देखे, जो कि 41 करोड़ से जंप होकर नेट प्रॉफिट 60 करोड़ पे पहुंचे, और रेवेन्यू दिख रहा है 76 करोड़ से जंप होकर 608 करोड़। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, थैंक यू फॉर एंडिंग मॉर्निंग कॉल, यू कैन नॉट डिस्कनेक्ट।